The ultimate garden center, green mall, green mall. ये है एक पेड़ करीब 12 साल पुराना है, महानीम है। इसको जो है हम लोग ने रूट कटिंग दिया है, करीब 1.5 महीना पहले रूट कटिंग दिया है। इस साइड का, उस साइड का रूट कटिंग हम लोग ने 3 महीना पहले दिया है। आज हम लोग इसको निकालेंगे, निकाल करके इसको बैग में फिट करके रखेंगे और इसके बाद ये कहीं भी जाने को तैयार है। चाहता तो नहीं है, इतने अच्छे बगीचे में है, कहाँ जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। दूसरे बगीचों को भी तो सुंदर होना पड़ेगा ना। महानीम, we had given root cutting of this side about 3 months back, and then we gave root cutting this side about 15 days back, and today we are going to excavate it and we will keep it in packet. Of course, this plant is not very happy. He is not happy because he has to leave this garden and go. He doesn't like to leave it and go. But anyway, he has to go now. Other gardens also have to be nice. Okay, you have to do your service somewhere else. Okay, dear. Some roots are jetting out. That is a good sign. That means new roots have come and they are quite healthy. ये जो प्लास्टिक से कुछ जड़ें बाहर निकल गई हैं, ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि पेड़ हेल्दी है, उसकी जड़ें बढ़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं। अब जो है ये खुशी खुशी जो है, कहीं भी इसको लगाएंगे तुरंत इसका ग्रोथ चालू रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। In Hindi it is called Mahaneem. Hindi or Bengali it is called Mahaneem. It's a very good tree. You look at the root, it's more than 12 years old. Only thing is we have to dig it out because this is blocking our way. This gives fragrant flowers, light blue color in the month of April, May. It's a beautiful tree and with beautiful flowers. It's a very desirable tree. We are sorry, but what to do? Let's see what's the condition inside. हाँ, अंदर तो बहुत अच्छी जड़ें आई हैं, बहुत अच्छी सुंदर जड़ें हैं। अब इस पेड़ को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। और ये बैग है 250 लीटर का, बहुत हाई डेंसिटी का पॉलीथीन है। इसमें जो है 10 साल भी पेड़ को रखा जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो उसमें से निकाल करके इसमें हम लोग रखेंगे। दिस इज UV stabilized HDPE bag, and this is very strong. This nothing will happen to this even for 10 years. So we are going to put the tree into this, and then it can be transported. This is 250 liter and very strong. अब ये लोग पुराना प्लास्टिक निकाल रहे हैं और नई roots. Now we can see the new generation of roots into the tree. So you can see it's quite stable and quite safe. कुछ अंदर की डीप रूट्स हैं, इनको काटा जा रहा है। थोड़ा पेड़ को थोड़ा सा सफ़र होगा, लेकिन कोई ज़्यादा खास वो नहीं होगा। और मोटी रूट्स है, मोटी रूट से तो पेड़ कुछ करता भी नहीं है, वो तो खाली पेड़ का ग्रिपर का काम करती हैं। So now this bottom roots which were not cut, they are being cut now. But anyway, plant will not suffer much because this big fat roots, they don't do anything. They don't extract nutrients from the soil. They are just there for generation of new roots. New roots are the roots which takes the food for the plant.
जो है इसमें कोकोपीट और मट्टी मिक्स करके इसको हम लोग भर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फिल इट अप with coco peat and soil, and we have to keep it little wet, means not fully dry and not very wet. It should be moist all the time. It should be moist, and kept it here because now it's winter, so for another 2 months there won't be any strong sun. इसको छाया में रखना चाहिए, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे रखा है क्योंकि अभी नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर चालू हो रहा है ठंड का मौसम है, तो दिसंबर जनवरी जो है धूप नहीं के बराबर होगी और होएगी भी तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। The ultimate garden center.